Welcome to the first workshop of ICHEF. Okay. So today, me, with Arwal, and we will be covering some basic introduction to Verilog and Dataflow modeling. Starting with what we will do in ICHEF and what you guys will be doing in ICHEF. So you will be designing circuits related to real life applications which will be useful in your real day-to-day life using hardware description languages. After that, once your code is simulated successfully and after getting it checked, your code will be implemented on FPGA boards, real-time FPGA boards. Like for the past 2 years, the event was conducted in online mode, so we'll be doing this time. Next, talking about what is HDL. HDL is a hardware description language which is very similar to your normal programming languages, just like your C, C++, and other MATLAB, etc. Like HDL is used for like modeling of digital functions that you can implement using digital circuits, etc. It is generally used to design complex digital circuits that cannot be automated, designed, simulated. Like that should be before using it on real hardware. We should be simulating those circuits. It can avoid the hardware damage cost. Some popular HDLs that we use in day-to-day life that are commonly used are Verilog and VHDL. In this event, we will be using Verilog. First of all, Verilog is very similar to C, so you must be familiar with normal coding that you do in C and C++. Whereas VHDL is similar to ADA and other Pascal languages, so Verilog will be handy for you. And VHDL is very more complex than Verilog, so it is very much preferred in industries also. There are some other HDLs as well, System Verilog, Handle C, System C. We won't be using those. System Verilog is nothing but is a superset of Verilog. Like it has more functions for verification, etc. But we will be using Verilog for this event. Now, simulating your Verilog codes to run, check and compile your codes, there are various softwares and platforms. Some of those are Xilinx Vivado that you will be using for this event. Hope you all must have been downloaded for that software. Other are some free tools that is Icarus, GHDL, and we have one more online platform, EDA Playground. So, like to check your small codes, if you want to implement some small module, you can check on online platform instead of checking it on Vivado, creating no projects, etc. Now we will go with some basics of Verilog. As I told you, Verilog is very similar to normal C and C++. So there are some conventions that are like completely same as C, which are things like comments. We have two types of comments in Verilog. Comments can be useful if you want to present your code to someone. Two types of comments are like one single line comment that is that you can use by double slash before starting of any statement. We have multiple line comments as well. Like while writing multiple line comments, you should be very careful about this. Like in the third statement, you can see it is an illegal comment. So keep this in mind. If you want to start a multiple line comment, you do it by slash followed by an asterisk, and if you want to end the multiple line comment, you do it by asterisk followed by slash. Okay. The operators that you use in Verilog, those are also similar to C. We have three examples for you. First one is unary operator. That is a simple negation operator. It is used to invert. It is used for inversion of bits.
First of all, you all know the difference between unary, binary, and ternary operators. Second year X, you must be knowing. Okay, so unary operators are the operators which is used for only single operand. Binary operators are used for two operands, and ternary operators are used for three operands. Okay, so the operators are very similar. We have shown you only three examples. You can also, like, if you want to go through other operators, you can see. You can search them online. So they're almost similar. Okay. Specification of numbers in Verilog. In Verilog, you can store data in terms of strings as well in variables if you want to like store something. But for numbers, there is a specific notation. If you want to store some binary, hexadecimal, or octal numbers, you will have to follow this format. It is very clear the format is first you will have to write the size of number in bits, followed by the base format, and then you write the number which you want to store. But like remember this, if you are writing it directly without this format, without following this format, then the number will be stored in decimal. Okay. So if you want to store it in binary, hexadecimal, or octal, then you need to follow this format. Then we have identifiers in Verilog. Identifiers is any name that you give to module, variable, wire, register, etc. function. But like to declare an identifier, you should follow these some rules. The identifier, you can write any alphanumeric character in the identifier, but the identifier cannot start with this dollar and number. Remember this, your identifier should always start with either a letter or an underscore. The identifiers are case sensitive. So these things will have to keep in mind. Keywords are some predefined identifiers which are already defined in the language. You cannot use those keywords as identifiers. The compiler won't understand it. Okay. All the keywords are defined in lower cases. For example, we have given some examples of keywords: initial, assign, module, always. Next, data types. In Verilog, there are four types of data that you can give to a module or a wire. These are 0, 1, X, and Z. 0 represents the low logic 0, which also indicates false condition. 1 is for high logic, it also indicates true condition. Whereas X represents a known value. Like, for example, if you have a module that gives you some output, but you haven't given it any input. So, for the time being, till the time you don't give it an input, it will represent X because you don't know what the output will be. Okay. So, and Z represents high impedance case. It generally means there is no connection between any two modules or that case. So here are some examples for X and Z. Now we go on with net versus register. The two most used data types like in Verilog are wire and register. Wire represents the connection between any two hardware components. It can be any gate or any module you design. Wire simply represents a connection. It is declared using the keyword wire. Default value of a wire is that until and unless you connect, until and unless you give input and output ports to the wire, it will take the value Z. The values to wires are assigned using the keyword assign.
These are the things you have to keep in mind while writing the codes. Register represents a storage element. If you want to hold a value to pass it on into some module, design module, then you can store it in register. It is declared using the keyword reg, and the default value of a register is x. Until and unless you will assign some value to register, till the time it will store the value x. It's an unknown value. And registers are assigned. To assign values in register, you will have to do it in procedural statements. Procedural statements we will talk about it later. Now, vector and buses in Verilog. Vectors in Verilog are used to represent multiple bit variables, such as like you want to declare a 8-bit wire or 8-bit register. Then, in that case, vectors are used. For initiating vectors, we have a simple format. You will have to first use the keyword wire or edge, whatever you want to use. Then in the square brackets, you will have to mention the length of vector, and then a simple identifier to assign a name to the vector. So we have two examples here. One represents a vector for wire, and one represents a vector for register. Now, going on with array. If you want, if you want to declare a number of variables at a time, we want to declare 12 variables. So we can do it in a simple way, writing different identifiers for the variable. And the other way, the smart way is to use arrays. In the case of vectors, we define the length of vector before writing the identifier after the keyword. But in while declaring the array, we will have to declare the length after writing the identifier. So this thing keep in mind. While this is the main difference between arrays and vectors. Generally, people get confused between those. So we have an example here like reg for semicolon 0 number 05, this one. This example simply represents a register of 5 bits, an array of 6 registers, and length of each register is 5 bits. Strings, as I told you in the beginning, you can also store strings in Verilog. For strings, this is a particular, we can only store strings in registers. Each character uses a space of 8 bits, that is 1 byte. In this example, we are storing hello Verilog word in this register string value. So it will be stored in the form of bits which represent the corresponding ASCII character of each character, ASCII value of each character. So the total length of register will be 8 into number of characters that string holds. Okay. The length of each character you will have to keep in mind while declaring the register, while declaring the length of register. System tasks. In Verilog, there are some predefined functions or operations that are that you know that you call system. What is the difference between variable and register? Like both can store values. Variable can be even your wire can be a variable, but registers are. So register is used to store something. Yeah. Now going on to system task. So system task is any predefined operation or function which is in Verilog. So some basic most common system tasks are display, write, store, monitor, stop, finish. Display system task is used to display the value of variable, any expression or string
The main property of display is that it ends with a new-line character. You don't have to add an extra new-line character in display. We have write system task. The main difference between display and write is write does not have a new-line character at the end. Otherwise, the function of both the system tasks is same. Then we have stroke as well. Stroke is also same as display and system task, but the basic difference between them is stroke displays the value of variable at the end of time step, whereas display prints the value of variable at the beginning of time step. In the monitor system task continuously displays the value of variable or displays the value of variable whenever it changes. Stop system task is used to just pause the simulation for some time, whereas finish system task is used for terminating the simulation completely. We have some examples for display task. As you can see in this code, while writing the argument for display, we will have to mention the data type of the variable, that we can see in this H indicator. H represents that our variable stores the value in hexadecimal, and the C indicator represents that our value is in decimal format. Similar is the case with monitor statements, but the difference is between the executions of those. Stop and finish is simple. In the stop system task, it will pause here for the moment, and after finish, it will execute the simulation, terminate the simulation completely. Now we will talk about modules. A module is a simple block of Verilog code that implements a certain logic function, any functionality. If you want to run a block or do some carry out some boolean equation or something. Module is basically a set of lines of Verilog code. It is enclosed between keywords module and end module. This is the syntax of module. You can see in the first line, after writing the keyword module, you will have to first declare the identifier name of the module and followed by the port list. Port list contains the output and input ports, set of output and input ports. After that, the content of module, which we will talk about later. And we will end the module with end module keyword. Now talking about ports. There are three types of ports in Verilog. First is input, output, and in-out port. The input and output ports are unidirectional ports, whereas in-out port is bidirectional. Ports represent basically the interface between any two modules or gates which you want to use in the environment. Now, we will be talking about this simple piece of code. We are declaring a module here the name of which is simple circuit, and as I explained earlier, we will have to declare the name of identifier after writing the keyword module. So we are naming the module as simple circuit, and it has 5 ports A, B, C, D, E. After that, followed by the semicolon, we will declare our ports. The output ports here are D, so we will declare them as output. Input ports are ADC, we will declare them as input. Then we are using a wire W1. This piece of code represents the circuit diagram shown above. This one, you can see input ports ABC and output ports EE as well. You can also see the connection via W1 between them.
then we will use the AND or gates. As I told you while mentioning the modules, you can write the code names in any sequence. But in the gates, you will have to write the output first, and then you will mention the input codes. Okay. Uh, there are some port connection rules which you need to keep in mind while declaring the variables. Like there are two types of ports: internal and external ports. So when you are designing your module, when you are describing your module, then you will use the input ports, internal ports. Sorry. Internal ports are the interfaces which you can reach through the internal design of module, like these arrows, which you can see inside the square box. These represent the internal ports, and external ports are the ones that user can access from outside the module. Okay. ये पोर्ट कनेक्शन रूल्स है ना, ध्यान से देख लेना, क्योंकि जब बाद में तुम मॉड्यूल्स को कनेक्ट करोगे ना, एक सिस्टम डिज़ाइन बनाएंगे अपन, तो एक मॉड्यूल नहीं होगा, उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, तो दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट करोगे तो काफ़ी काम आएगा। फिर तुम कोड गलत लिखोगे, कहाँ रेस लेना है, कहाँ वायर लेना है, फिर बहुत गलतियाँ होंगी। तो ये भी ध्यान से देख लेना कि पोर्ट कनेक्शन रूल्स कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये इंटरनल और एक्सटर्नल कोर्स में कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, ये अभी आराम से पढ़ लो जो लिखा हुआ है, और अगर अभी डाउट है तो पूछ लो। बाद में दिक्कत आएगी कि कहाँ रेस लिया, कहाँ वायर लेना है, समझ नहीं आएगा सर। Okay, so these are the let me explain you one by one. Okay, so when we are talking about input ports for a module, so this one internal input port can be of only net type. Okay, while external input port can be either H or net, and in output mode, the internal output port can be either H or net, but the external should be net. In the case of in-out ports, external and internal both pins can be net. Okay. Any doubt in this one? Okay. So simulation and yes. How we define internal and external? Do we need to specify from our end that this? No. You need not to specify that, but Alexis को specify करना है, but तुम अपना डिजाइन करोगे। इंटरनल कोड्स वही होते हैं जो तुम अपना मॉड्यूल डिजाइन करते थे यूज कर रहे हो। एक्सटर्नल कोड्स जब तुम टेस्ट में से इनपुट दे रहे हो उस मॉड्यूल में, या तुम दूसरे मॉड्यूल को कनेक्ट करते टाइम कर रहे हो, दोस आर एक्सटर्नल। Now simulation and testing. After writing the design module for simulation, we write a different test bench. Like that code is known as test bench, which we use for simulation. In order to, this is a basic structure of a test bench. You will have to first declare the module. You can module name you can give it template. You don't need to declare any codes while writing the test bench. Okay, only the name is enough. This is a simple example of test bench. We will show you the simulation after some time, but you can go through it. Here we are first declaring the input ports register ADC. If we go through the port connection rules, like we can see that ABC are the input ports to the module simple circuit. Okay. So while writing the test bench, we will use external port rules. So we will have to declare ABC as either H or net. But this is one thing that while writing the test bench, input ports are always declared as net. You can use them as net while if you are connecting it to any other module, but in the test bench you will declare it as net. So ABC are the
input ports. We have declared them as switch. DER output ports. We have declared them as wire. As you can see in this port connection rules. Now we are declaring the simple circuit module. The port order should be same as declared as stored while designing the module. Now we are changing the values of A, B, C variables, and after that we will notice the output. This is a simple timing diagram of output for the previous code. Now let me See, in the simulation, अपन को simulation किया तो टेस्ट बेंच में हमने कहीं भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, जैसे A B C की जो वैल्यूज हैं, ये जो ग्राफ है ये बने, ठीक है? तो विवाद पर simulation करेंगे तो विवाद will automatically, okay? It will automatically dump all the variables, और उसकी वैल्यूज हैं बाद में अच्छा से वगैरह पे आती हैं. When we are using pre-simulators like SAS and EDA playgrounds, there you won't be getting that functionality, so we have to dump these variables explicitly. This portion of the code, initial period, now finding this portion of the code, we have to add it every time, so that we get that wave, this curve. Okay. If we want to add this portion of the code, then that curve we won't be getting. And throw a key, dump all the variables in VCD file so that we can get this waveform. Okay. So whenever you use EDA playground or EKS, then do not forget to add this line. Okay. Otherwise, you won't get waveform. Output you will get, simulation will be correct, but waveform you won't get. Okay. We'll see how it's done on EDA playgrounds, and you are both we will see at the end of the. So now let's come how we design, like how we implement or design Verilog. There are actually three methods: gateway modeling, Dataflow modeling, and behavioral modeling. We will be seeing all these three. Okay. Let's look first at gateway modeling. Okay. As the name suggests, you might have an idea कि gateway modeling है तो पहले आपको gateway design बनाना पड़ेगा उसका. ठीक है, पेन एंड पेपर पे. जैसे बेसिक में तुमने बेसिक में सीखा होगा कि कैसे gateway design बनाते हैं पूरा सर्किट. Okay. Drawing those truth tables for the circuit and then finding the Boolean equation and then then making that gateway diagram. Okay. जब gateway diagram आ जाएगा ना, उसके बाद अपन direct code करेंगे. So you have some predefined gates in Verilog. Okay, so we will be implementing those gates directly, and then the circuit will burn at these and whatever. That is further thing. Okay. So ठीक है. So basic gates जो होते हैं add, or, not, and, nor, XOR, these all are predefined. Okay, so we can directly use them in our code. We need to make a new module for using these. Okay, these are predefined. So actually we can, it's written Verilog also provides capability to generate user-defined primitives. UDPs will generate, but in further workshops we will tell you that how to generate UDPs. Like ऐसा होता है ना कि एक सर्किट होता है बार-बार यूज आ रहा है. So what you do is you create a function and then you use that function again and again. So we will do the same thing in Verilog also, but that's a part of the circuit which we have to use frequently. So we will be making a UDP, user-defined primitive, and we will be using them like this AND and OR gates. Okay. So we will see that. See, in gate level module, this is the syntax. First we will write the keyword, like which gate we are using, AND gate, OR gate, NOR gate. So that keyword we will write. AND gate here we are using, so we will write AND. Okay. Now the name of the gate, like I will give call this gate G1 or G2 or G3. Okay. This is for just for the convenience. Okay. So gate name is optional. It is not required, but for convenience you can give a gate name. Okay. And in this brackets, first will be the output. Okay. The gates will be using can have multiple inputs, but output will only be one. See, you know it that gates only one output.
inputs can be multiple. Okay. So first entry is the output, and further you can 3 input, 4 input, 5 input gate. So you know, it's just the syntax. It's defined, predefined. Okay. Here are the examples on the syntax. See, in the first example, basic instance, AND gate we are implementing. So AND A1, AND is the keyword. That the gate we are using is AND gate. A1 is the name of the gate, and out is the output of that gate. In1, into this gate contains 2 inputs. Okay, in1 and these are the 2 inputs. And see, like for the fifth example, XOR gate. The gate name is XOR. The gate is XOR. The name is X1, and the same thing. Out is the output, and there are 2 inputs. So there are 3 input gates. NAND gate. NAND we are using gate is the name is NA1 underscore 3 input, and output and 3. Yeah, I guess you get it. It's not that hard. Okay, limitations with gate level approach. See, I already told you that gate level approach will be using when we have a whole circuit diagram with us. Like we'll be making the diagram, we'll be reaching the diagram of the circuit. Okay, till the gate level diagram of the circuit. But think if the circuit is too complex, there are like hundreds of gates, or like we just know how the circuit works. Okay, we do not have an idea how to design the whole that. How to get whole design of the circuit. So what we'll be using? We'll be using behavioral modeling or data flow modeling, because now we can not use gate level modeling. Okay, जो काम फिर एक लाइन से होगा या गेट लेवल मोडेलिंग 100 गेट होंगे तो 100 गेट अपने को लिखने पड़ेंगे कि हर गेट का इनपुट क्या है, वो किसका आउटपुट बन रहा है, तो वो सब देखना पड़ेगा अपने को, तो पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन वो नहीं करेंगे, we'll directly use behavioral modeling or data flow modeling. Okay. But actually, तुम जब assignment code करेंगे तो try to implement that in both Dataflow and gate level modeling. Okay, those programs try to implement in both Dataflow and gate level modeling. So next is gate level modeling. Dataflow modeling में क्या है कि अपने को एक्चुअल में जैसे अपने गेट लेवल मॉडलिंग में क्या किया था, पूरा गेट से सर्किट बनाया था और फिर इंप्लीमेंट किया था। बट लाइक ऐसा होता है कि जैसे अपने पास प्रोग्राम है, अपने ट्रुथ टेबल बनाया उसका, ठीक है, ट्रुथ टेबल बना के अपने उसका एक बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया, ठीक है, नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन। तो अपने पास डेटा फ्लो में क्या होता है कि अपन डायरेक्ट उस एक्सप्रेशन को उठा के रखना था और वहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे, और वो जो है वो फिर सेम काम करेगा, जो गेट बनाने का जैसा उसी काम से काम करेगा, बस अपना इजी ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर दिया, ठीक है। सो डेटा फ्लो मॉडलिंग में अपन असाइनमेंट्स यूज करेंगे, कंटीन्यूअस असाइनमेंट्स। सो कंटीन्यूअस असाइनमेंट्स क्या होता है कि रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स वैल्यू स्टोर करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। जब यूजर को नीड होती है तो वो वैल्यू को यूज कर लेते हैं। लेकिन कंटीन्यूअस असाइनमेंट्स में क्या होगा कि वो वैल्यू होल्ड नहीं करेगी, वो ऐसा उसको वैल्यू फ्लो करती रहेगी, नई वैल्यू आएगी आगे चल जाएगी, फिर से नहीं आएगी, फिर से आगे बढ़ेगी, वो होल्ड करके नहीं करेगा वैल्यू। ओके, अगर वो वैल्यू सेम दे रहा है मतलब कि आगे से वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है, इट वोंट कीप वैल्यूज, ठीक है, कंटीन्यूअस असाइनमेंट्स में। तो अभी अपने को पता था पीछे अपने क्लास में देखा था कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनको वैल्यूज अपन इनिशियल ऑलवेज ब्लॉक्स में डिफाइन करते हैं वैल्यूज को, बिकॉज़ रजिस्टर्स जो है वो वैल्यूज होल्ड करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट से अपन उनको वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि असाइन स्टेटमेंट्स कंटीन्यूअस स्टेटमेंट्स होते हैं, तो रजिस्टर्स को अपन असाइन नहीं करेंगे। वायर्स को अपन असाइन से वैल्यूज दे सकते हैं, ओके, क्योंकि वायर्स क्या करते हैं, वायर्स वैल्यू स्टोर नहीं करते ना, वायर तो वैल्यू को फ्लो करते हैं, ओके। सो ओके, हाँ, अब देखो जैसे बिहेवियर मॉडलिंग और गेट लेवल मॉडलिंग में डिफरेंस क्या है। अपन ने गेट लेवल मॉडलिंग में सीखने को एंड गेट इंप्लीमेंट करना है, तो अपन एंड A1 का नाम दिया, फिर वो पूरा सिंटैक्स अपन ने लिखा, ठीक है। अभी गेट लेवल मॉडलिंग में क्या करेंगे कि असाइन आउट इज इक्वल टू IN1 एंड IN2, मतलब कि जो आउटपुट जो है वो इनपुट 1 और इनपुट 2 का एंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जो एंड यूज किया है ना, एक्चुअल में दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। सी में पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, इट इज बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वहां पे ध्यान रखना कहां लॉजिकल यूज करना है, कहां बिटवाइज यूज करना है। सी में पढ़ के आया होगा, ठीक है, सी तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो सी वाले सिंटेक्स लॉजिकल बिटवाइज का वो थोड़ा ध्यान
ठीक है, ऐसे इसमें एक्स और अपन ने असाइन किया, तो वही एक्स और का साइन अपन ने डायरेक्ट यूज कर लेंगे, जो आउटपुट जो है वो इन 5 और इन 6 का एक्स हो है। ओके, सो डायरेक्टली ऐसे अपन यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज करेंगे असाइनमेंट में, डेटा फ्लो मॉडल में, सो वो इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है, और सी से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा फ्लो मॉडल में हमेशा असाइन स्टेटमेंट यूज करेंगे। ओके, सी देयर आर सम रूल्स विद असाइन कीवर्ड। ओके, एक्चुअली में अपन जब कोड करते हैं तो अपने ये लगता है कि असाइन स्टेटमेंट यूज तो कर लेते हैं, बट पता नहीं रहता कि वायर कहां लेना है, रजिस्टर कहां लेना है, वायर को वैल्यू कैसे देनी है, रजिस्टर को कैसे देना है। तो ये थोड़े से रूल्स हैं। ठीक है, असाइन स्टेटमेंट के साथ एलएचएस पोर्शन होगा, एक आरएचएस पोर्शन होगा। ठीक है, तो एलएचएस शुड फॉलो द स्केलर और वेक्टर नेट। ठीक है, एलएचएस में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर वैल्यू होल्ड करता है, जबकि असाइन जो है वो होल्ड नहीं करवाता वैल्यू, वो वैल्यू थ्रो करेगा। तो राइट साइड में हमेशा एक नेट ही होना चाहिए। एक्चुअली में अपन ऑलरेडी नेट वायर होता है, एक्चुअली नेट 11 टाइप के होते हैं, बट वी विल बी यूजिंग वायर ओनली। ठीक है, वायर इज टाइप ऑफ नेट, सो यहां पे नेट से जब भी नेट बोला जाए तो उसको वायर कर सकते हो। ठीक है, तो एलएचएस में कभी भी रजिस्टर मत रखना असाइन स्टेटमेंट के साथ, इट शुड बी ऑलवेज ए नेट। इट कैन बी वेक्टर और स्केलर। वेक्टर मतलब कि मल्टीपल बिट नेट हो सकता है, दैट इज फाइन, बट इट शुड नॉट बी रजिस्टर। ओके, और एक कंकैटिनेशन ऑफ स्केलर और वेक्टर नेट, और कंकैटिनेशन देखेंगे आगे क्या होता है, but it should not be a register. Okay, RSS can contain a register. RSS can contain vector as well as net as well as register. Okay. See, actually में assign जो है असाइनमेंट जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तो नॉर्मल असाइनमेंट देख लो कि वायर अपन ने एक वायर डिफाइन कर दिया पहले कि एक 2 बिट वायर है अपने पास, एक उसका नाम ये है, वो 2 बिट का है। फिर अपन उस वायर को कोई वैल्यू दे दी x एंड y, मतलब वो जो वायर जो वैल्यू कंटेन करेगा x एंड y का एंड होगा, लॉजिकल एंड। ओके, एक तो ये हो गया असाइन करने का। फिर अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि वायर a x एंड y, ये भी असाइन कीवर्ड हमने यूज नहीं किया, बट ये इंप्लिसिट होता है कि भाई यहां पे असाइन किया तो जो ऊपर वाले जो रूल्स हैं वो सारे लगेंगे। ठीक है, जो असाइन में जो रूल्स हैं वो भी लगेंगे, यहां असाइन दिख नहीं रहा लेकिन है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। असाइनमेंट कंकैटिनेशन। ठीक है, सी जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं कंकैटिनेशन के लिए यूज करते हैं हम। एक्चुअली में कंकैटिनेशन तो समझ ही आ रहा होगा नाम से, भाई दो को ऐड करके जोड़ दिया है ना। लाइक अपने पास ऐसा है कि एक 3 बिट रजिस्टर है, एक इधर 2 बिट रजिस्टर है। ओके, कंकैटिनेशन का मतलब ये होगा कि इनको ऐड ऐसे कर दिया, अभी 5 बिट रजिस्टर हो गया। ओके, so concatenation is a idea what is concatenation. Okay, so these are actually some examples. ये मैंने इसलिए डाला था कि concatenation में कभी कंफ्यूजन होता है, तुम एक बार ध्यान से देख लेना एग्जांपल्स में, और वो फाइनली क्या आउटपुट देगा वो इधर लिखा होगा। ठीक है, ये तुम घर जाके ये बस एग्जांपल से ताकि थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए concatenation के बारे में। सी एक्चुअली आपके पास एक प्रॉब्लम है ना, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास दो मेथड पड़े हैं, डेटा मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग। ओके, सो we'll definitely going to data flow modeling तो इजी है, एक मिनट में काम हो जाएगा, 2 लाइन हो जाएगा, आपको क्या करना है, बट स्टिल अपने पता होना चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास प्रॉब्लम है तो और एक रफ डायग्राम बना लेंगे कि भाई मॉड्यूल्स बना लेंगे, भाई इनपुट्स क्या है इसमें और इसके आउटपुट्स क्या है। मतलब यूजर को तो वही होता है ना, जो एंड यूजर होता है उसको ये भाई इनपुट ये मेरा आउटपुट क्या है। ओके, सो एक रफ डायग्राम बनाएंगे, देन वी विल क्रिएट अ ट्रुथ टेबल। Okay, just like we do in any digital circuit equation, we will be getting a truth table. And truth table से अपन क्या करेंगे, boolean equation जनरेट करेंगे। Now when we have the boolean equation, what we will do कि decision में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है वो जो भी असाइनमेंट boolean बना लिया। अभी सिंपली एंड और नॉट केस, जो सिंपल बेसिक केस होते हैं अपन ने डायग्राम बना लिया, सर्किट डायग्राम पूरा डायग्राम है अपने पास। अभी अपन यहाँ क्या करेंगे कि डेटा फ्लो क्या करेंगे, डायरेक्ट boolean इक्वेशन उठा लेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, असाइन यूज करके। और गेटर में क्या करेंगे कि पूरा सर्किट बनेगा, फिर उससे एंड नोड से भी कनेक्ट वो करेंगे। ओके, दोनों ट्राई करके देखना कि अपन अभी तो दोनों डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल लेते हैं, क्रिएट अ डिजिटल सर्किट दैट टू सिंगल बिट नंबर्स A B and gives output as high if A is greater than B, otherwise gives output as 0। ठीक है,
अपने पास एक अपने को सर्किट डिजाइन करना है जो कि इनपुट लेगा ए और बी, ठीक है, और आउटपुट हाई तभी आएगा, मतलब कि आउटपुट 1 तभी होगा जब इनपुट ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, सो व्हाट वी विल सिंपली डू स्टेप 1, लेट्स क्रिएट ए रफ ओवरऑल मॉड्यूल, ओके, रफ डायग्राम what are the inputs, what are the outputs, okay, a and inputs and output बना देते हैं। Step 2, clear the table problem, okay, so whenever a b, तो a b के चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके, ये चार ही इनपुट दे सकते हैं ना, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उनके रिलेटिव अपन आउटपुट लिख दिया, ठीक है, तो एक ही केस होगा a ग्रेटर देन b होगा, यस, उसमें अपने आउटपुट को हैंड करना है, ठीक है। अभी ट्रुथ टेबल सॉल्व करना तुमने डिस्कशन में सीखा होगा, ओके, कंबाइनर सब सॉल्यूशन सॉल्व करके उनमें ट्रुथ टेबल सॉल्व करना सिखाया होगा। के मैप अगर आपने सॉल्व किया होगा, के मैप अगर नहीं आता है तो देखते हैं के मैप कैसे सॉल्व करना है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वर्कशॉप्स के रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। स्टेप 3 में अपन ने बुलियन इक्वेशन जनरेट की, तो वो ट्रुथ टेबल से बुलियन का क्या करना है वो इस समझ में सीखते हैं, तो वो वाला काम। अभी अपने पास बुलियन इक्वेशन है a b बार, ओके, स्टेप 4 गेट लेवल मॉड्यूल में क्या करते हैं अपन की बुलियन इक्वेशन से अब अपने को गेट लेवल सर्किट बनाना है, ठीक है, तो अपन ने सर्किट बना दिया a बार और ये b बार दिया अपन ने, और फिर उसका a के साथ एंड गेट और फिर आएगा फाइंड आउट गेट लेवल अपन डायरेक्टली इस इक्वेशन को उसको इंप्लीमेंट करते हैं, डेटा फ्लो में होता है, तो गेट लेवल देखते हैं, पहले सर्किट बनाया हमने, ओके, सर्किट रेडी हो गया। अभी अपन एक्चुअली में मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल एक सर्किट ही होता है, एक तो मेन सर्किट जो होता है अपन लेते हैं, तो डिजाइन में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक कंपोनेंट होता है उसका एक इंटरनल सर्किट भी होता है, तो जो कंपोनेंट होता है ना उसी को अपन मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है, तो मॉड्यूल कंपेयर नाम से हमने बनाया, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर अपन ने डिफाइन करते हैं कि इनपुट्स और आउटपुट्स क्या है, ठीक है, तो अपन ने नाम दिया आउट ए कॉमा बी, ठीक है, ये अपने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, ओके, देन इन द नेक्स्ट लाइन सी सेमीकोलन ध्यान रखना, जैसे सी में ध्यान रखते हो तो वो हर लाइन के एंड में आएगा, एंड ऑफ द लाइन विल बी डिनोटेड बाय सेमीकोलन, ओके, सी अब नेक्स्ट लाइन में इनपुट ए बी, सी अपन ने ऊपर ब्रेसेस में सिर्फ इनपुट आउटपुट डिफाइन किए थे, तो नाम डाला था कि ये नहीं डिफाइन किया कि इनपुट कौन सा आउटपुट कौन सा, बट ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, व्हाट आर इनपुट्स व्हाट आर आउटपुट्स, सो इनपुट a b आउटपुट आउट, ओके ना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे अपने इनपुट आउटपुट का ये नहीं लिखा कि ये स्थिर है वायर है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं वायर है, ओके, ये लिखा नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट इसको वायर का लिखा नहीं है, ओके। अभी इनपुट आउटपुट डिफाइन करके नेक्स्ट आप देखो कि इस जो ऊपर जो डायग्राम है जो सर्किट बनाया है, ठीक है, उसमें एक बीच में वायर चाहिए, देखो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे W जो वायर बनाया हुआ है, ठीक है, वो अपने को चाहिए ना, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा, तो वो डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, तो अपन एक वायर डिफाइन करेंगे, कोई भी नाम ले लीजिए वायर W, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स में नहीं आया क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरनल सर्किट का पार्ट है, ओके, सो अपन इसको बाद में डिफाइन करेंगे मॉड्यूल के अंदर वायर W। नाउ सी देयर आर टू गेट्स एक्चुअली, नोट गेट एंड एंड गेट, ओके, सो अब अपन ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले नोड को इंप्लीमेंट करेंगे एंड को बाद में करेंगे, अपन किसी को भी पहले लिख सकते हैं किसी को बाद में, तो नोड गेट अपन ने किया एंड नोड गेट में फिर अपन ने आउटपुट सी गेट लेवल में क्या करते हैं, नेमिंग लेवल नहीं होता गेट का, ठीक है, बस कीवर्ड हो और आउटपुट पहले आउटपुट फिर, तो आउटपुट क्या था नोड गेट का W, इनपुट क्या था B, ओके, एंड the input to AND gate is A and W and output is out. So in the same manner we have written first output then input. Okay, and naming of the gate is not necessary. That Verilog will do by itself. Okay, it will see how the gates are connected by input and outputs and do all those things. Naming is not necessary. Okay, see when we started the module, so we have to add it also. AND module keyword is also important, so we have written that. Okay, so yeah, this is the implementation of it. See, this is the design module. Okay, we are not creating test bench here. Test bench बनाना पड़ेगा, डिजाइन बनानी पड़ेगा, डिजाइन को टेस्ट करना है ना अपने को, एक टेस्ट बेंच बनाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ डिजाइन बना के दिखाते हैं, डिजाइन मॉड्यूल। सी एक्चुअली टेस्ट बेंच क्या होता है, टेस्ट बेंच भी एक मॉड्यूल ही होता है, ओके। टेस्ट बेंच ऐसा मान लो कि ऐसे टॉप लेवल मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसमें जितने भी बाकी मॉड्यूल्स है ना जिनको भी टेस्ट करना है उनको अपन इंस्टेंशिएट करेंगे और फिर
उनमें अपन वैल्यूज डालेंगे, इनपुट्स में वैल्यूज देंगे थोड़ी सी भाई, ये अपने एक्सपेक्टेड ये इनपुट्स है और ये एक्सपेक्टेड आउटपुट अपने पास है, और फिर अपन वहां से आउटपुट देखेंगे कि अपना डिजाइन क्या आउटपुट दे रहा है, देन विल वेरीफाई। ओके, एक्चुअल वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिफिकेशन मैनुअली करना पड़ता है, सिस्टम वेरिएबल में काफी सारे और एक्सटेंशंस हैं, तो वहां पर आसान होता है, बट विल लिमिट योर रिस्ट्रिक्शन टू वेरिएबल टिल वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल बाद में देखेंगे। आई गेस ये विजुअल है ना, कोड जो लिखा हुआ है सबको नीचे साइड थोड़ा कट रहा है, ठीक है। See, this is gateway model. Okay, we are only talking about the design aspect of it. That's when we are create नहीं करना है, we create। See, in Dataflow model देखो बाकी सब सेम है, मॉड्यूल अपन ने मॉड्यूल की वजह से या जो भी नेम द मॉड्यूल की नाम क्या उसका ब्रेसेस में अपने इनपुट आउटपुट को चले वो इनपुट आउटपुट डिफाइन किए, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन Dataflow मॉडल यूज कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग नाउ कि असाइन आउट इज इक्वल टू a एंड b बार। तो एक इक्वेशन जो थी ना अपने पास, बूलियन एक्सप्रेशन जो आया था आउट इज इक्वल टू a b बार, वो डायरेक्टली अपन उठा के असाइन कीवर्ड के साथ यूज कर लिया। ओके, सो आउटपुट क्या था, आउट असाइन आउट इज इक्वल टू a एंड आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस। ये तो बूलियन डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किए ऑपरेटर्स को यूज करके ठीक सी में किया होगा, बस ये इज है Dataflow में कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे अपन ने स्टार्टिंग जब ऑपरेटर्स देखे थे स्लाइड्स में, तो सी टर्सरी ऑपरेटर देखा था, एक्चुअली में तुमने डिसीजन पे वो पढ़ा हुआ है मक्स क्या होता है, ठीक है। मक्स में क्या होता है कि एक्चुअली में सिलेक्टिव इनपुट्स देते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट आता है, ठीक है। एक्चुअली में तो ऐसा ही है, जो अपना जो टर्सरी ऑपरेटर जो होता है वो मक्स का ही काम करता है, ठीक है। अपन ने इनपुट क्या दिया है कि b, जैसे b जो है b तो सिलेक्ट लाइन हो गया था, ठीक है, और जो अपनी जो इनपुट लाइंस होती है वो c and d हो गई यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप कंडीशन ये देखिए पहले कि अगर b ट्रू है तो आउटपुट c होगा और b फॉल्स है तो आउटपुट d होगा, ठीक है। तो ये मक्स वाला काम कर रहे हो, ओके। और एक्चुअली में अपना प्रॉब्लम क्या था कि if a is greater than b then output is 1, otherwise output is 0, तो मक्स ही हो गया ना। if a is greater than b, this condition if it is true then output is a and output is actually 1, and if this is false then output is 0, okay। एक अपने पास सिलेक्ट लाइन हो गया और दूसरा अपने पास वो इनपुट्स हो गए 1 and 0, सो मक्स की तरह काम कर रहा है। सो एक्चुअल में वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। if a is greater than b then output is 1 and if this statement is false then output is 0, okay। so अपन काफी बार ये भी यूज करेंगे टर्सरी ऑपरेटर, सो इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। अदरवाइज दिस इज आल्सो Dataflow मॉडलिंग, अपन ऑपरेटर्स ही यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ Dataflow मॉडलिंग, बट ये इसको दो टाइप से करते हैं। पर वाला साइंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो साइंस स्टेटमेंट है उससे भी सेम प्रॉब्लम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज up to you how you want to implement it, okay। See next example, implement full adder circuit। जिसमें तुमने पढ़ा होगा कि full adder जो होता है सर्किट का boolean equation sum का और carry का, ठीक है। so I am not going to details of the boolean equation that how we derive it। we finally need to give the boolean equation of sum and cout, okay। now we are implementing it, so what we do in gate level, sum का अपन एक सर्किट बनाएंगे और एक cout का अपन एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। फुल एडर का सर्किट बनेगा, दो आउटपुट्स है ना अपने पास, तो एक सम का होगा एक दूसरी कैरी आउट का होगा, ओके। सो अपन ने सर्किट बना लिया, सर्किट बनाना इज अप टू यू, ओके। अब यहाँ तक पहुँचना आपने, फिर बाद में अपना वैल्यू का काम स्टार्ट होगा। ये अगर तुम्हें अभी कुछ डाउट है इसमें सर्किट्स वगैरह कैसे जनरेट करते हैं डिजिटल सर्किट्स, तो वो मतलब डिजिटल वर्कशॉप्स, ओके, वो हेल्पफुल होगी काफ़ी। एक्चुअली कोर में तो डेसिमल आई से करना है इसलिए तुम लोगों को, ठीक है, पूरा ढंग से कर लेना, ठीक है। वर्कशॉप देते हो प्राइमरी काम है। सो हियर द सेम मैनर व्हाट वी डिड की मॉड्यूल फुल एडर, मॉड्यूल का नाम देखिए, ठीक है। अंदर जो प्रेसेस में अपने इनपुट आउटपुट सपोर्ट भी सकते हैं, इनपुट क्या करते हैं बस ए बी सी एंड आउटपुट क्या है सम एंड कैरी, ओके। सो आउटपुट अपने डिफाइन किया सम एंड सी आउटपुट इनपुट डिफाइन किया, ठीक है। फिर अपने क्या किया, अगर सर्किट में देखो कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सर्किट के अंदर इंटरनली अपने को वायर अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे, ओके। वायर्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन इनपुट और आउटपुट
ये डिफाइन किया अपन ने वो जो अंदर में वायर्स चाहिए उनको डिफाइन करना पड़ेगा गेट लेवल में, ठीक है। तो वो अपन ने वायर अपने 3 वायर्स हैं, तो अपन ने क्या किया कि रेदर डिफाइनिंग की 3 अलग-अलग अपन ने वायर डिफाइन करना, उसमें बेटर अपनी ये थी वो जो अपन यूज करते हैं उसको यूज कर लिया, ठीक है। सो यहाँ वो बेटर होगा कि एरे यूज करने का, यहाँ पे एरे यूज कर लिया अपन ने। अभी फिर एक एक्सओर गेट का वही एक्सओर गेट नेम दे दिया, देन आउटपुट एंड देन एंड, ओके। एंड एक्सओर गेट G2, G2 क्या है, आउट इज सम, इनपुट्स आर W0 and where 0 and C, ओके। सिमिलरली फॉर एंड गेट्स, ये दोनों एंड गेट्स डिफाइन कर लिया, आउटपुट बता दिया कौन सा है और फिर बाद में इनपुट्स दिए। ये सिंपल है डायग्राम बन गया। तुम बस एक गेट को उठाओ, उसका इनपुट आउटपुट देखो, उसको छोड़ो, दूसरा उठाओ, अगला उठाओ, ठीक है। हर एक कंपोनेंट को उठाओ, फिर इनपुट आउटपुट डाल दो, गेट कंपोनेंट सिंपल है, ठीक है। और बीच वाला जो वायर्स की जरूरत है वो एटोस वायर्स, ओके। तो वो इंटरनल पार्ट है सर्किट का, तो वो मॉड्यूल के अंदर ही अपन डिफाइन करेंगे, वही यूज करेंगे। फंक्शंस में होता है ना ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और एक लोकल वेरिएबल्स होता है, वो लोकल वेरिएबल टाइप्स होते हैं, ओके। एंड देन द कीवर्ड एंड मॉड्यूल, ओके। अब सेम थिंग को अपन डेटा फ्लो में जैसे इंप्लीमेंट करेंगे, डेटा फ्लो यूज करके, तो अपने पास तो डायरेक्ट बुलियन इक्वेशन है ना, आप इतने पंगे कौन करेगा कि भाई तुम सर्किट जनरेट करो, फिर अंदर वायर्स की वायर्स डिक्लेयर करो, ओके। और फिर बाद में काफी बड़ा सा कोड होता है। डेटा फ्लो में क्या करें, डायरेक्ट अपने क्या किया, बाकी सब सेम, असाइन सम, ये जो करंट ब्रैकेट जो है इसके अंदर देखो, असाइन सम इज इक्वल टू a x और b x और c, ठीक है। डायरेक्ट अपन ने इक्वेशन उठाया और इंप्लीमेंट कर दिया, तो अपना सम हो गया, असाइन c आउट इज इक्वल टू a and b और c and a x और b, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन उठाया और इंप्लीमेंट कर दिया। तो बस डेटा फ्लो में तो ऐसे इंप्लीमेंट करना होगा। See, and actually में we can use the concatenation property as well. See, अपन जब 3 नंबर्स का सम करेंगे, so आउटपुट भी होता है, जरूरी नहीं कि 3 सिंगल बिट्स का सम सिंगल बिट में आ जाए, ऐसा नहीं है। So 1 1 1 1 ऐड किया, मतलब 3 है, 3 is 1 and 1, so there is 1 carry and 1 sum. In addition we might have seen that, okay. So actually में ऐसा देखो कि जैसे अपन a plus b plus c डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि अपन कोड में डायरेक्ट लिख देंगे a plus b plus c, ओके। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे किसी केस में ऐसा हो गया कि कैरी आ रहा है, ठीक है, तो कैरी कहाँ जाएगा तुम्हारा, तुमने लिख दिया असाइन आउट, असाइन सम इज इक्वल टू a plus b plus c, ओके। सम भी सिंगल बिट का है तुम्हारा, ठीक है, a plus b plus c वो सब सिंगल बिट के हैं, लेकिन उनका जो सम आ रहा है एक्चुअली में वो तो 2 बिट का आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट यू डू कि सी आउट और सम जो सिंगल सिंगल बिट को कंकेटेनेट कर दिया अपन ने, तो जो सम जो आएगा उसमें ओवरफ्लो वाला बिट जो हो रहा है वो सी आउट में चला जाएगा और जो सम है वो सम में आ जाएगा। समझ आ रहा है बात? और डाउट है? ओके, सी दिस इज जस्ट एक एग्जांपल, तुम ये जानकारी देख सकते हो कि 4 क्रॉस 1 जो मक्स जो होता है उसको सर्किट बनाओ उसका, ठीक है। रेसिड्यू में सीखा होगा सर्किट कैसे बनाते हैं, उसका ट्रूथ टेबल बनाओ, सर्किट बनाओ, ठीक है। और गेट लेवल से इंप्लीमेंट करके यहाँ दे रखा है, डेटा फ्लो से करने का तुम खुद ट्राई करना, ठीक है। ये डेटा फ्लो से कैसे करना है और असाइनमेंट कोड करेंगे उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे, तो आज से कोड प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी अपन असाइनमेंट पार्ट पे आते हैं, ओके, कि असाइनमेंट कैसे विवाडो कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। मैंने एक पीपीटी से लिया था, इसमें फाइल का लिंक भी था, कितने लोगों को हो गया इंस्टॉल? मतलब ऐसा है कि किसने ट्राई किया इंस्टॉल करने का, कोई प्रॉब्लम आई हो, भाई कुछ हो नहीं रहा, जहाँ पे डॉक में कोई दिक्कत हो, डाउनलोड नहीं हो पा रहा। सी आई सजेस्ट कि इनमें से किसी का डाउनलोड हो गया है ना, देखो 20 दिवस हो गए, तुम लैंड से ट्राई करो, वाईफाई से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में क्रोम में डाउनलोड रुक जाता है तो फिर काफी दिक्कत आती है, फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये तो फ्री डाउनलोड कर डाउनलोड कर लो एंड यूज इट एंड यूजर लैंड पर परचेस भी आते हो, ओके। और यू कैन टेक फ्रॉम दिस गाइस, इन्होंने डाउनलोड कर ही रखा है, ये तो पेन ड्राइव से शेयर कर लो, ओके। ललित दीज आर नो पेन ड्राइव पर डाल ओके। अभी देखो एक्चुअल में विवाडो में क्या होता है ना, कल विवाडो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं।
you need to create a project. क्रिएट प्रोजेक्ट को क्लिक करना। ये विंडो आएगा, नेक्स्ट कर देना। प्रोजेक्ट का नाम जो देखना अपने को, जैसे वर्कशॉप ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया। आगे प्रोजेक्ट फाइल है। अभी अपने को क्या करना है कि फाइल फाइल करनी है, तो अपने पास दूसरी फाइल होनी चाहिए। ये तो डिजाइन फाइल होती है अपने पास, ओके, और एक टेस्ट फाइल होती है। तो ये पर डिजाइन फाइल इसमें ऐड करना है। तो क्रिएट फाइल, इसमें लैंग्वेज वेरिएबल लिखना है, ओके। यहाँ पे फाइल करना है, जैसे देखो कंपेयर, जो अपने कंपेयर वाला जो अपने लिखा था कोड अभी, ए व्यू कंपेयर किया था वो वाला, तो वो वाला अपन सेट करके देखते हैं, ठीक है, कि परफेक्टली चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने फाइल का नाम कंपेयर लिखा है, तो कंपेयर डॉट वी जब ये फाइल बन जाएगी, कंपेयर डॉट वी को वेरिएबल, ठीक है। एक्चुअली में काफी सारी फाइल्स में डॉट एसवीजी चाहिए हो सिस्टम वेरिएबल के लिए, लेकिन कंपाइलेशन चल जाता है वो, ठीक है। वो सेम है, सेम वेरिएबल वाला ही कोड आएगा उसमें भी, बस एक्सटेंशन अलग होगा उसमें। तो अभी देखना मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर 10 दिन से एडमिन कर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये मांग रहा है कि कौन से बोर्ड पे आप जो पूरी रूप से बर्न करना चाहोगे, या पीसी बोर्ड से होते हैं, ठीक है। फॉर नाउ विद स्टैंडर्ड में पहले तो कोई भी चूज करो, चलेगा। फ्लैश कर See, now it is asking the module name actually. Okay. So module name होता है, module compare अपने को दिया था, so अपन यहाँ पे डायरेक्ट वो नेम डाल देते हैं, तो compare नाम है, ठीक है। ये अगर चेंज करना हो तो फिर लिख के चेंज कर सकते हैं, या फिर बाद में हम चेंज कर सकते हैं। मॉड्यूल नाम करना तो अपने कोड में भी नाम लिखेगा। इसने डायरेक्टली जनरेट कर दिया मॉड्यूल कंपेयर एंड मॉड्यूल, ओके। ये जिसका फॉर्मेट था उसने दे दिया, हमने बना के। अभी अपन खुद अपना बनाएंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अपन ने डिजाइन फाइल बनाई, डिजाइन फाइल गूगल है ना, कोड क्या लिखा हुआ है नहीं दिख रहा, किसी यूज कोड को चाहता हूँ, सेम को किया है वहाँ पे ये कोड दिख रहा है। अभी विजिबल है कोड, ओके। सो यही सेम कोड अपन ने वहां डाला है, ठीक है, डिजाइन मॉड्यूल में। सो एक्चुअली में मॉड्यूल कंपेयर आउट a b, ओके। तो इनपुट सब में लेते थे a b आउटपुट आउट, ठीक है। एक्चुअली में ये जो इनपुट यहां लिखा है ना, ये डायरेक्टली यहां पे सकते हैं आउटपुट आउट और इनपुट
है, और यहाँ से अपन इनको हटा के इनको हटा सकते हैं, यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को हटा सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, वो सेम तरीका है, बट अभी थोड़ा ऐसे है। ओके, सो ये कोड अपन ने यहाँ किया, ठीक है, डिजाइन फाइल हो गया अपना। नाउ टेस्ट बेस फाइल बनाना है, सो क्या करना है, ऐड सोर्सेज जो है ना, देख लो यहाँ पे एक बार सब ध्यान से कि सैंडविच कैसे करना है, वरना सब कुछ करने तो कर लेते हैं। ऐड सोर्सेज, क्रिएट सैंडविच सोर्सेज, ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ऐड फाइल, क्रिएट फाइल करना है, ठीक है, तो मैं इसका नाम कंपेयर टीवी, टीवी को टेस्ट कर सकते। अभी ये कंपेयर टू टी से एक दूसरा फाइल लिख जाएगा, ओके, सो अभी ये बोल रहा है मॉड्यूल का नाम क्या रखना है, जो टेस्ट बेंच भी होता है वो एक मॉड्यूल भी होता है ना, तो उस मॉड्यूल का नाम होता है कंपेयर टीवी को सेम नाम रखना है, ठीक है, बन गया। सोर्सेस में जाना, यहाँ पे सोर्सेस वाला कहीं आ जाए, हाँ कंपेयर ठीक है, फिर वही सेम इसने कंप्लीटिंग मॉड्यूल बना के दे दिया। अभी इसके अंदर डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन अभी अपन ने पूरा बना रखा है। सी टाइम स्केल क्या होता है, टाइम स्केल जानने से टाइम स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ns/1 पिकोसेकंड, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे ऐसे टाइम स्केल क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जब अपन कोड में जहाँ भी टाइमिंग डिले डिफाइन करेंगे ना अपन, तो उसका यूनिट कैसे होगा, कोई डिफाइन यूनिट क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 ns लेते हैं, ओके। तो अभी ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, इसका टेस्ट बेंच कॉपी करते हैं, ठीक है, ये इसका टेस्ट बेंच हो गया, ओके। अब टेस्ट बेंच में देखो तो मॉड्यूल कंपेयर टीवी, टेस्ट बेंच में जब हम मॉड्यूल का नाम डिफाइन करेंगे तो बेसिस बना के कोड्स डिफाइन करने की कोई जरूरत है नहीं, ओके, सिर्फ मॉड्यूल का नाम डायरेक्ट और फिर सेमीकोलन। नाउ वी विल मेंशन इनपुट, सी कोड करेक्शन रूल्स में अपन ने देखा था कि जो एक्सटर्नल करेक्शन रूल्स होते हैं उनमें इनपुट जो होता है वो रेज या नेट हो सकता है, और आउटपुट जो होता है वो नेट ही होगा, ओके। अभी टेस्ट बेंच की बात करें तो टेस्ट बेंच में फिर क्या होता है कि अपने को इनपुट्स देने होते हैं, ठीक है, तो उनको फिर स्टोर करना पड़ेगा ना, तो टेस्ट बेंच में तो अपन इनपुट्स को वायर रख के क्या ही करेंगे, कहीं और से आ थोड़ी है टेस्ट बेंच में, अपन दे रहे हैं, सो वी नीड टू स्टोर देम समवेयर। सो टेस्ट बेंच में हमेशा याद रखना कि इनपुट तो रजिस्टर ही होंगे और आउटपुट वायर, क्योंकि आउटपुट जो करेक्शन रूल्स में ही अपन रेस्ट्रिक्शन लगेगा वो वायर हो सकता है, इनपुट्स में टेस्ट बेंच है तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगेगा कि अपने इनपुट्स देने पर रजिस्टर में स्टोर करने पड़ेगा, ओके। तो अभी अपने इनपुट्स क्या ले लिए, ए और बी को रजिस्टर कर दिया और आउटपुट जो है उनको वो करा वायर कर दिया। ये टेस्ट बेंच में हमेशा ऐसे होगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग से नहीं भी लगाना, ये ऐसे होगा, ओके। और प्रेसेस में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इनपुट आउटपुट डिफाइन करेंगे, टेस्ट बेंच मॉड्यूल नाम क्या है, ओके। सी अब क्या करना है, अपन टेस्ट बेंच अब अपन टेस्ट किस मॉड्यूल पे कर रहे हैं, किस डिजाइन पे कर रहे हैं, एक्चुअली में मॉड्यूल बताना पड़ेगा अपने को। सो हमने कंपेयर, इधर मॉड्यूल का नाम क्या था, कंपेयर, सो मॉड्यूल नेम एक्चुअली में कंपेयर, फिर अपन जो उस मॉड्यूल का एक अपन इंस्टेंशिएट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका इंस्टेंशिएशन जब करेंगे अपन तो उसका एक नाम देना पड़ेगा, तो भाई उस पर्टिकुलर का क्या नाम है, तो यूयूटी मैंने नाम दे दिया, जैसे यूनिट अंडर टेस्ट, ओके। और वो किस डिजाइन सोर्स से रिलेटेड है वो अपन पहले लिखेंगे कंपेयर डिजाइन का अपन नया यूनिट बना रहे हैं और फिर उस पे अपन वैल्यूज लेके टेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली में सी यहाँ पे ये देखो कंपेयरिंग के अंदर प्रेसेस के अंदर अपन ने ये दिया है कि अपन अपनी साइड से क्या इनपुट्स लेंगे और किस वेरिएबल में आउटपुट लेंगे, किस वैल्यू में आउटपुट लेंगे, ओके। तो इधर देखो कंपेयर में क्या था कि आउट a, b, इस ऑर्डर में अपन ने
जो है इनपुट आउटपुट डिफाइन किए थे आउट ए बी। सो यहाँ पे जब ऐसे नहीं करते हैं डॉट ए फिर ब्रेस में ब्रेसेस फिर ए डॉट बी फिर ब्रेसेस फिर बी फिर डॉट आउट फिर सी, ठीक है। तो इसमें जो है ना ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे डॉट ए को है मतलब डॉट ए जो है ना बाहर वाला ए जो है ये जो मेन डिजाइन में जो अपन ने वेरिएबल लिया था ना, मेन डिजाइन में जो नाम दिया था ये वो है, और डॉट बी वो है डॉट आउट, ठीक है। तो मेन डिजाइन में अपन ने आउट ए को बी लिया था, लेकिन यहाँ पे अपन इनपुट्स क्या ले रहे हैं, ए बी ले रहे हैं और आउटपुट सी ले रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, तो डॉट आउट ब्रेसेस में सी डाल दिया कि वहाँ पे जो आउट जो डॉट आउट वहाँ पे जो है उसका आउटपुट अपने यहाँ पे सी में लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट किया अपने दोनों मॉड्यूल्स को, तो जो दोनों में जो वेरिएबल्स हैं उनको भी देखो पता करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना कौन सा वेरिएबल किसके रिलेटेड है, लेकिन वही काम नहीं है यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऐसे लिख सकते हो इस कन्वेंशन में, ओके। विजिबल है? ओके, अभी उसका इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि भाई मॉड्यूल अपने जनरेट कर लिया यहाँ पे कि इसका टेस्ट मॉड्यूल जनरेट किया है डिजाइन का। अभी इनिशियल स्टेटमेंट्स जो है वो अपन बिहेवियर मॉड्यूल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या होता है क्या नहीं होता है, बट अभी टेस्ट बैंक का मैंने यूज करना है उनको, तो अभी ध्यान रखो इनिशियल बिगिन और मतलब ऐसे होता है, अलग अलग होता है, इनिशियल स्टेटमेंट अलग है और बिगिन और एंड अलग है, ठीक है। इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, बिगिन और एंड के अंदर एक बिगिन और एंड जो ब्रेसेस जो होते हैं ना अपने वो होते हैं, बिगिन से ब्रेस स्टार्ट हो और एंड के अंदर खत्म हो गया, ठीक है। तो बिगिन और एंड के अंदर जो होगा ना वो इनके अंदर ही होगा, फिर तो इनके अंदर अगर अपने लोकली यूज करते हैं तो इनके अंदर ही है, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी जाकर उसको यूज कर लो बस, ठीक है। अभी मॉनिटर सिस्टम टेस्ट पढ़ा था, इधर भी ए बी सी में किसी की वैल्यू चेंज होगी तो वो डिस्प्ले कर रहा है, ओके। फिर अपने क्या किया कि ए को वैल्यू दी 0, बी को वैल्यू दी 0, ठीक है। तो सी कुछ आउटपुट आएगा अपना, ठीक है। तो सी बी यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा है, इसमें लिखा है कि ए सी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, ए और बी है। ये हैश टैग का मतलब ये होता है कि अपने टाइम स्केल डिफाइन किया था ना 1 नैनोसेकंड स्लैश 1 पिकोसेकंड, पिकोसेकंड तो प्रिसीजन था 1 नैनोसेकंड टाइम स्केल, तो 1 नैनोसेकंड का से मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है। तो 10 नैनोसेकंड के लिए के बाद अपना नए इनपुट्स अपन ने दिए, ए को 0 किया, बी को 1 किया, फिर 10 के बाद नए दिए, ए को 1 किया, बी को 0 किया, तो जो भी क्या कंडीशन हमने दे दी टेस्ट करने के लिए आउटपुट अपन डिजाइन क्या देंगे, ठीक है। अगर सही दिया तो फाइनल, नहीं तो फिर अपन वापस से एक बार कोड देखेंगे कि डिजाइन में कहां गड़बड़ है कहां नहीं, उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, फिर भी इधर यही तो प्रोसेस होता है एक्चुअली में वेरिफिकेशन का, कि भाई आउटपुट जहां एरर दे रहे हैं उनको जाकर ठीक करो, फिर वापस से टेस्ट करो, ठीक है। और डॉलर मींस ये सेपरेशन ऐड करने के लिए भाई खत्म हो गया, बस इसका नहीं करना, ठीक है। वरना वो फिर सेपरेट करते रहेगा, वो टाइम मतलब चलता ही रहता है सेपरेशन। एक्चुअली में विवाद बाय पर सेपरेशन आई गेस 1000 नैनोसेकंड तक चलता है, सेटिंग में जाके बटन देख लेना, अगर लंबा सेपरेशन है बहुत बड़ा कोड अपने पास प्रोजेक्ट काफी बड़ा है तो उसको बढ़ा देना, वरना वो बीच में रुक जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं विवाद में। तो ये अपने सैंपल टेस्ट बना लिया, यहाँ पर रन सैंपल दिख रहा है, इस पे क्लिक करना, रन बिहेवियर सैंपल, ओके। अभी ये सैंपल हो रहा है, अब जो डिजाइन है वो अपने टेस्ट में जो अपने इनपुट्स दिए हैं उन पे सैंपल हो रही है, इन इनपुट्स के पर्टिकुलर क्या आउटपुट आएगा, ओके। सी अब नीचे लोग दिया है, अपन ने मॉनिटर वाला स्टेटमेंट डाला था ना, तो अपन ने 4 बार 4 बार ए बी इसकी वैल्यू चेंज की, तो 4 बार ए आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। तो वे अपने देखिए ए बी जब 0 ए बी 0 बी भी 0, सो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, सो सी इज 0, ओके। ए इज 0 बी इज 1, स्टिल ए इज लेस देन बी, सी इज 0, ए इज 1 बी इज नॉट ग्रेटर देन बी, सो आउटपुट विल बी आल्सो 1, ओके। आउटपुट विल बी हाई, सो
And in the next one, A is 1, B is 1, A is still not greater than B. So what it is? 0. So our simulation, मैं अपने देखने की टेस्ट जो है वो सही आ रहा है. तो डिजाइन फाइन क्या ही मॉडल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टेस्ट करके देख लेंगे मतलब डिजाइन सही है. ठीक है. अभी यहाँ पे एक चार्ट भी जनरेट हो जाता है. सेट में जो वेवफॉर्म मैंने बोला था भी बड़ा अपने आप जनरेट कर देता है. ठीक है. सो इसमें तुम ऐसा देख सकते हो कि ये जब हाई था, ए जब हाई था और बी जब लो था, सी क्या आया? हाई आया. ठीक है. और ये करेक्ट ही है. when a is high, b is low, means a is greater than b, so output will be high. Okay. Otherwise, in all other conditions, output is low. Okay. So you can see that in this chart. ये काम विवादों. अब देखो एक्चुअल में विवादों में एक और चीज होती है जो इंग्लिश में होता है. एक्चुअल में जो सर्किट का तुमने मतलब कोड जो तुमने किया है ना उसके सर्किट बना के भी दिखा देगा कि इस कोड के रिलेटेड क्या इस सर्किट बनेगा. तो आप इस भी बर्न करेंगे तो उसमें कौन कौन से कनेक्शंस होंगे एक्चुअली. ठीक है. वो भी दिखा देगा. थोड़ा टाइम लगेगा बट दिखा देगा. सो ओके. ये डिजाइन है अपना. ओके. वो इसने दिखा दिया. ठीक है. ऐसा दिखाया है डिजाइन. सो दिस इज फंक्शनैलिटी ऑफ डिवाइडर. ये अपन ने जो कोड किया वो डिजाइन करके दिखा रहे हैं. अब अपन ने एक्चुअल में ऐसा थोड़ी दिखा था कि एंड के इनपुट्स ये होंगे और फिर आउटपुट ये होगा. ऐसे कुछ गेट लेवल कोडिंग तो की नहीं थी बट ये कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं. सो ये बेनिफिट है इसमें. कुछ लोग डिजाइन का PS3 से कर रखा है. हमारे लोग ने कोड करके फिर यहां से डिजाइन उठा लिया. करना होता है कर सकते. अब देखो इधर कैसे इसको यूज करना है. ये होगा. ठीक है. तो विवादों में जैसे तुम कोड कर रहे हो तो तुम्हें ये लगता है हर बार एक नया प्रोजेक्ट बनाओ फिर उसमें फाइल सेट करना तो सबमिट करना थोड़ा टाइम भी लेता है. ऐप भी खुद से कर लेते हैं. ठीक है. वो काफी प्रोजेक्ट होते हैं. तो अगर तुम्हें डायरेक्टली ऐसे करना है कि बस अपने पास एक कोड को टेस्ट करना चल रहा है चला तो ईडी पे तुम खोलो. ठीक है. इधर डिजाइन को डालो. ये वाला जो साइड है डिजाइन को डाल दो जो भी अपना डिजाइन वाला. ये इधर टेस्ट मैच वाला कोड. ओके. सो यहाँ पे टेस्ट मैच वाला कोड जो डालना है. हाँ ठीक है. टाइम स्केल हो गया. इनपुट मॉडल का आउटपुट इनपुट आउटपुट हो गया. ठीक है. अभी यहाँ पे ये कोड जो है ये अपन ने उधर से दिखाया है जो भी वर्ड में यूज किया था. ठीक है. अब इसमें अपने वो डंप वेयर्स वाले यूज नहीं कर सकते. यहाँ पे प्री असाइनमेंट करना है अपने आप काम नहीं करते. तो अपने बताना पड़ेगा ये मेरे को व्यूअर जो है उसमें चाहिए मुझे देखने हैं तो मैं वो दिखाऊँ. इसमें अपने को डालना पड़ेगा अलग से. तो अपन क्या करेंगे ये वाली जो लाइन है ये ऐड कर देंगे. तो ऐड नहीं करो तो इधर फाइल करेंगे भाई सीडी फाइल जनरेट नहीं होगी. ठीक है. तो तुम ये कैसे देख सकते हो. ऐसा मिलता है ना इस फाइल का मतलब ये है कि एक डॉट फाइल बनाओ compare.tcd नाम से. ठीक है. और उसमें ये वेरिएबल डाल दो. मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया. इसका मतलब है जितने वेरिएबल सब डाल दो जितने भी अपने इसमें मॉड्यूल में वेरिएबल्स हैं. ठीक है. अब ये तो क्या करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो भी लैंग्वेज अपना वेरिएबल की. UVM ये कोई यूज नहीं करना है. टाइप में इसलिए कोई यूज नहीं करते तो इसको कर देते हैं. सिमुलेटर को यूज करेंगे अपन फीचर्स का कोई लेटेस्ट वर्जन यूज कर लेते हैं. ओके. एंड यहाँ पे लिखा है ओपन ईपी वेव ऑप्शन करना है ना. अभी सेव करो एंड नाउ रन. यहाँ पे मल्टीपल सिमुलेशंस में सारा मूवी कर सकते हो. तो दिक्कत है फर्स्ट सिमुलेशन.
ठीक है, तो ये जब फाइल्स वाला तो तुमने कोड डाला था उसी से वेबफॉर्म आया, मुझे वेबफॉर्म नहीं आता कि तुरंत हो जाता है कि इसकी फाइल नहीं है, ठीक है। पेपर लिखा तो वो क्या डाल दिया टेस्टिंग वाला डिजाइन वाला कोड डाल दिया, बट अभी ठीक है। ये वो देखे ना जो भी वेबफॉर्म में वेबफॉर्म आ गया, और अपने ये जो मॉनिटर वाला कमांड आया था उसके रिलेटेड आउटपुट आ गया, ओके। AB0 C0 जब A ग्रेटर देन B है तो C होगा, ओके। तो बस आज के वर्कशॉप के लिए इतना ही है, ठीक है। आप डाउट